So hello everyone. Let us start. एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिक्स, राइट। और मैकेनिक्स अगर हम देखें तो काफी इम्पोर्टेंट है, आगे चल के भी मैकेनिक्स काफी रोल प्ले करता है। और पहली बात ये कि मैकेनिक्स बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम ज्यादा टच नहीं करेंगे। सिर्फ जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और अगर किसी को बहुत ज्यादा डाउट हुआ देन यू कैन मेल मी, आई विल गिव द मेल इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। सो फर्स्ट थिंग, अगर हमें कभी भी न्यूटन लॉज मैकेनिक्स से स्टार्ट करना है तो द फर्स्ट थिंग from which we collide is Newton's laws of motion. So we will discuss today Newton's laws of motion and understand the some basic and familiar concepts which everyone ignores, right? But it's important. So let us start. First thing, Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. यू कैन फाइंड द स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी places, right? You can see in your books or you can Google it. But the most important thing is we have to understand the meaning, real meaning of Newton's laws of motion, right? So अगर हम सबसे फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है और इस पे हम कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स और ना ही कोई पर्सन इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इट मींस इफ नेट इज इक्वल टू 0, मतलब कि इस बॉडी पे एक्सटर्नल कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ये बॉडी सिंपल ऐसे ही है, ठीक। या फिर एक्ट कर भी रहा है तो नेट फोर्स 0 है। जैसे अगर इस बॉडी पे इधर से फोर्स एक्ट कर रहा है 2 न्यूटन और इस साइड से फोर्स एक्ट कर रहा है 2 न्यूटन, so on this body the net force is 0, right? So in this case Newton first law is applicable, and what the Newton first law is says that if F net is 0, then we know that F is equals to mass into acceleration, and mass cannot be 0, so acceleration is equals to 0. It means Newton first law is saying that if net force is 0, then the body will not accelerate. This is very important. It is not saying that if you not apply force, अगर आप force apply नहीं कर रहे हैं किसी बॉडी पे तो वो बॉडी रुका रहेगा, वो बॉडी सिर्फ accelerate नहीं करेगा। अगर वो बॉडी पहले से मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। एक्सेलरेशन का मतलब कि उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, बॉडी के वेलोसिटी डज नॉट चेंज, बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ये कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि बॉडी रुका हुआ रहेगा या फिर कुछ भी, सिर्फ ये सिंपल सा बात कर रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। मतलब v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू 0 एंड देन v इज इक्वल्स टू u। ये सिंपल सा बात कह रहा है कि अगर आप u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर आपका 0 है देन फाइनल वेलोसिटी विल आल्सो 0। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज समथिंग है 5 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ भी है, then final velocity will also be the 5 meter per second. This is very interesting. If you are not applying force, right? If you are not applying any net force, then your body will not be at rest, right? बॉडी का सिर्फ एक्सेलरेशन 0 होगा अगर आप फोर्स नेट फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा और रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, राइट? Let us move forward for the second law. So second law says that if the rate of change of momentum
Rate of change of momentum means dp by dt. This is in differential form. Rate of change of momentum. Momentum is simply mass times velocity. It is a vector quantity. So it says that the rate of change of momentum is equals to the force applied. Simple. Remember, F is equals to ma is not the Newton's second law. Many people says that, बहुत लोग ये कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F is equals to ma. ये टोटली गलत है, ये टोटली गलत है, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस है. वी विल डिस्कस हाउ इट इज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. F is equals to ma is only a special case of Newton's second law. So here F is equals to d upon dt, mass times velocity. So only if mass is constant, then it will come out from your differential, right? If mass is not constant, then it will be inside the differential, and we have to apply product rule, right? For product rule, we have d by dx of uv is equals to du by dx, keeping v constant, plus u dv by dx, right? So in the same way here, if we consider mass as a constant, then it will be dv by dt. If we consider velocity as a constant, then it will be dm by dt. This is Newton's second law. Newton's second law, it is not F is equals to ma, right? So only if mass is not changing with time. So you may ask that, is mass also changing with time? Yeah, it's changing with time. Like a falling raindrop, right? Raindrop always loses its mass. Case of rocket. Right, rocket propulsion. Right. So if dm by dt is equals to 0, if dm by dt is equals to 0, it means mass is not changing with time. Then only F is equals to mass time dv by dt, and dv by dt is nothing but acceleration. So F is equals to ma. Let us come for Newton's third law. Newton's third law is simple. Everyone knows that to every action there is equal and opposite reaction. But Newton's third law is also not quite, right. It has also some limitations. Yeah, it has limitations. And if you can tell me, it will be quite impressive, right? So to every action, equal and there will be equal and opposite reaction. For example, if we have a mass, a body, and a second body, body 1 and body 2. If body 1 is applying a force F1 on body 2, then F1 on body 2, then F2 will apply somewhat a force on also on body 1. And the interesting thing is कि इन दोनों force का magnitude जो is, for example, let us consider a wall. You are pushing a wall. You are pushing a wall. So right. So wall is also applying some certain force on you. If you will push, then wall will also apply certain force on you, right? So these both the magnitude of both these forces are equal. The magnitude of here F1 and the magnitude of F2 is equal. Direction may be opposite, direction may be something else, I don't know. Direction may be perpendicular, direction may be opposite, I don't know. But its magnitude will be equal. So these are the these are the three laws of Newton. We will discuss some problem related to it in the upcoming lectures.